Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hi friends, so here is another class of educational psychology, and in this class we learn about Kohlberg's theory of moral development. Kohlberg's theory of moral development. तो ये moral development को नहीं कि Piaget भी तंकर concept देई चुनी moral development रे, but significantly we discuss worldwide if in concern with moral development the theory of Kohlberg's is very important. तो आमे वर्तमान एई क्लास रे moral development रो concept केमती Kohlberg different stage रे केमती define करिसंती से बाबदर देखिबा. आउ जेमिति कि मो डिस्कशन आगु कहिछि जे OSSTET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे दिस थ्योरी इज वेरी इंपोर्टेंट और CTET OTET जो एग्जाम आगु आसीबो इन एवरी एग्जामिनेशन वी फाउंड देयर इज ए वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड इंपोर्टेंस ऑफ Kohlberg's theory of moral development. Okay, so let's start with Kohlberg's theory of moral development. Okay, then in this class we focus the points, that is Kohlberg's stages of moral development, different stages of moral development, then stages of ita ame tar jo concept upre discussion kariba. The next part re ame tar stages upre discussion kariba, different stages of moral development, and third part re ame application of Kohlberg's theory ko jaga re ame apply kurchunti ta babad ro gote brief discussion ame dekhiba, and the last criticism of moral development जोटा Kohlberg देइथिले कोन कोन सेतरे क्रिटिसिज्म हमर रहउची कोन कोन प्रॉब्लम रहउची से बाबद रे टिके डिस्कशन करिबा. सो ई पॉइंट ऑफ व्यू रे हमें ई थ्योरी टा को कंप्लीट करिबा. आउ स्टार्ट विथ द कांसेप्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय Kohlberg. तो Kohlberg based his theory on the series of moral dilemmas presented to his study subjects. Participants were also interviewed to determine the reasoning behind their judgment in such a scenario. So morality, that is a value. Okay. So when we want to know the values are inculcated within the individual or not, at that time the only way, that is the judgment. So आमे judgment करिबा तार से जो concept गुडा ता भितरे जो development होउची, जो रीजन बेस्ड रे से कांसेप्ट गुडा को रिप्रेजेंट करूची, से कांसेप्ट को हमें जज करिबा आउ ता पाखरे कोन डेवलपमेंट होउची से कांसेप्ट को दबा. एई कथाटा Kohlberg कर मोरल डेवलपमेंट रे थिला. तो गुडा एग्जांपल से नै चंती जोटा कि वेरी फेमस एग्जांपल, तो ताकू टिके देखिबा. देन हेंस स्टील्स द ड्रग्स. बुझिले कि हेंस गुडे इंडिविजुअल जे कि ड्रग औषध चोरी कला, तो कोन सिनेरियो रे चोरी कला से चोरी कथाटा को से देइ चंती गुडे स्टेटमेंट रे. In this scenario, a woman has a cancer and her doctor believed only one drug might save her. Gote drug, the cancer is gote drug ही ताको save करी परियो. This drug have been discovered by a local pharmacist and he was able to make for it $200 per dose. Gote dose में $200 से नबो and sell it for माने से तैयारी करची $200 गोटे डोज में, किंतु से बिक्री करची $2000 per dose. The woman's husband hence would only raise $1000 to buy the drug. Okay, तो से $1000 ही माने ता पाखरे रहउची, ता पाखरे अछि से, किंतु तार एक्चुअल प्राइस हला $200 खर्च होउची ताकू तयारी करिया पय, किंतु से जो डिसऑनेस्ट सेलर से कोन करची ना ताकू $2000 से बिक्री करची, किंतु हेंस जे कि से वोमेन लो हस्बैंड ता पाखरे $1000 अछि. तो ये हला गोटे कंडीशन गोटे दिया गला. नेक्स्ट रे से कहले ही ट्राइज टू नेगोशिएट विथ द जो तार हस्बैंड, हेंस ही ट्राइज टू नेगोशिएट विथ द फार्मासिस्ट फॉर ए लोअर प्राइस और टू एक्सटेंडेड क्रेडिट टू पे फॉर ए ओवर टाइम. ताको टाइम दिया जाउ किछि से 1000 पेमेंट कर दबो आउ नहले टिके प्राइस कम करू देले से पेमेंट करिके औषधरा नै जिवो. बट द फार्मासिस्ट रिफ्यूज टू सेल इफ इट फॉर एनी लेस और एक्सेप्ट पार्शियल पेमेंट. तो पार्शियल पेमेंट हो बा कम रे हेले से बिक्री करियो नै बोली मना कर देला. देन रिवॉल्व्ड हेंस इंस्टेड ब्रोक इनटू द फार्मेसी एंड स्टोल. राति रे से कोन कला से फार्मेसी को भांगी देई कि फार्मेसी जो थिला औषध दुकान को भांगिला
stole the drugs to save his wife. Kohlberg asked, should the husband have done that? तो ये जो कामटा कला ता हस्बैंड ठीक कला ना भूल कला तो ये भलिया जदि हम गोटे कॉन्सेप्ट दिया जाए एठी आम भितर कोन डेवलपमेंट हो से कॉन्सेप्टटा सी जहा कला ता हस्बैंड जहा कला सेटा राइट और रॉन्ग. Kohlberg was not interested so much in the answers of whether Hans was wrong or right. सेथरे सी बेसी इंटरेस्ट नथिले but the reasoning for each participant decisions. सी ठीक Hans ठीक की भूल सेथरे तांकर किछि मतलब नथिला but those participant provide the answers of the ए क्वेश्चन ले जो माने आंसर देले ता पछरे समान रीजन को डिस्कशन करबा कथाटा को बेसी इंपोर्टेंस दिया गला. He then classified their reasoning into the stages of theory of moral development. तांकर जो रिजल्ट आसिला सो रिजल्ट रो जो रीजनिंग कॉन्सेप्ट रहिला अकॉर्डिंग टू द रीजनिंग कोलबर्ग डिफाइन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन 6 पार्ट इन 3 कैटेगरी. तीनटा कैटेगरी से 6टा स्टेज रे तीनटा कैटेगरी रे से 6टा स्टेज को डिफाइन कले जे केमिति मोरल डेवलपमेंट होउची गुटे इंडिविजुअल पाखरे. ओके तो से स्टेजेस गुडा को वर्तमान देखिबा. Kohlberg's theory is broken into 3 primary levels. तीनटा प्राइमरी लेवल रे भांगिले सी प्रथमे एंड at each level of moral development there is a 2 stage. सबु लेवल रे दीदीटा स्टेज हम पाइबा तो टोटल हमर 6टा स्टेज रहिबो तीनटा लेवल रे. Similar to how Piaget believed that not all people reach the highest level of cognition development. जेमिति कि समस्ते सबु इंडिविजुअल हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन पहुंची परिबे नाही निजो को पहुंचई परिबे नाही. सिमिलरली कोलबर्ग बिलीव नॉट एवरीवन प्रोग्रेस ऑफ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट. जेमिति पियाजे कहिले जे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहुंचीबा दैट इज इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट. सिमिलरली कोलबर्ग आल्सो डिफाइन द हाईएस्ट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट टू रीच दैट इज आल्सो ए डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडिविजुअल्स. तो एटी आमे देखिले जो को स्टेज रे से देखिले कोन कोन करा हला. तो प्रथम लेवलटा हला प्री कन्वेंशनल मोरालिटी जोटा कि 0 to 9 इयर्स भितर रुहे. एटी दीटा स्टेज रुहे. स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. सिमिलरली सेकंड स्टेज रे आमे देखिबा कन्वेंशनल मोरालिटी जोटा अर्ली एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड को जाय. तो एथरे दीटा स्टेज 3 डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड स्टेज 4 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. देन पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जोटा कि हमरो सम एडल्ट्स मान को पाखरे रेयरली देखा जाए आ जोटा कि स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. सो हियर इन 3 लेवल्स कोलबर्ग डिफाइन 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी. ओके तो एई गुडा को हमें डिटेल ले ई तीनटा लेवल आ 6टा स्टेज को डिफाइन वर्तमान करिबा. The first level that is pre-conventional morality. Pre-conventional, conventional just पूर्वरु जोटा कि pre stage रे आमे जते बेले रहंती सेही stage रे आमे जते बेले छोटो पिला थांती सेही stage रे आमे पाखरे केमिति morality रो डेवलपमेंट हुए सेही बाबद रे डिस्कशन हिची. तो pre-conventional morality the earliest period of moral development. It lasts until round the age of 9. 9 वर्ष कंप्लीट हला बेलकु एई pre-conventional morality रो stage चली थाए. Children's decisions are प्राइमरीली सेव्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ एडल्ट्स. तो एडल्ट्स मान द्वारा ही तांकर जो डिसीजन थाए कारण से माने सेतले जो डिसीजन नियंती से डिसीजनटा राइट कि रॉन्ग तांका पाखरे जेहेतु मैच्योरिटी न आस्ता दे शुड नॉट डिसाइड व्हिच थिंग्स आर राइट और व्हिच थिंग्स आर रॉन्ग. बट बाय द हेल्प ऑफ एन एडल्ट इंडिविजुअल सेही कांसेप्ट गुडा को हमें प्रॉपर सेव देई परिबा. एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रेकिंग द रूल्स जो रूल गुडा ब्रेक करूचंती बा करिवे तो तार कॉन्सिक्वेंसेस कोन होबो प्रॉब्लम कोन आगु को आसीबो ए सब बाबद रे हमें तांगु रियलाइज करि परिबा. So here there are two stages within the level. सब स्टेज रे दुई दुईटा लेवल जो अछि से दुईटा लेवल कथा ही एटी डिस्कशन हेछि. The first stage obedience and punishment. The earliest stage of moral development obedience and punishment are especially common in young children. कारण एई समय रे देखिबो बहुत पिला अछंती they are very obedient in nature मानंती and sometimes they also make different mistakes and for this mistake we also get provide some punishment to them. Okay, so but adults are also capable for expressing this type of reasoning. According to the Kohlberg, people at this stage see rules as fixed and absolute. Rules are fixed as absolute.
obeying the rules is important because it is a way to avoid punishment. तो जो very simple ଯେତେବେଳେ ଆମେ punishment ର concept ରଖିଛନ୍ତି ई stage ରେ କଥା କୁହା ଯାଉଛି तो morality develop ହେଲା ବେଳେ if someone do not maintain proper manner at that time we also provide some punishment to these individuals. So एई केस रे एई जो punishment को avoid करिया पई से माने कोन करती ना obedient ही जांती obedience तांको पाखरे obeying the rules and regulation एई concept तांको भितरे development हुए. सो ए स्टेज रे ए प्रकार डेवलपमेंट हुए कोन ना ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पनिशमेंट को बंद माने जो न आनिबा पई तांको पाखु अवॉइड करिया पई से माने ओबीडियंस बा ओबीडियंसी जो कैपेसिटी बा मोरालिटी रो डेवलपमेंट तांको पाखरे हे जाय. देन द स्टेज 2 दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. एट द इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज द moral development children account for individual points of view and judge actions based on how they serve individual needs. Okay, तो तांको point of view रे individuals point of view रे से माने decide करंती जे मु जो कामटा करूची बा करिवि that work or that function is right or wrong. Okay, एई भलिया कथा आसे जोटा कि hence dilemma जो थिला children argued that best course of action was the choice that best served hence need. Okay, then reciprocity is possible at this point in moral development. A point को मन रखिबा reciprocity is possible at this point of moral development but only if it serves one's own interest. आउ जो reciprocity जो कथाटा हम कहउचंती that is totally depends upon one's own interest. ता निजर जनकर इंटरेस्ट ऊपर माने जो रुहे बा से इंडिविजुअलिज्म ऊपर फोकस करिवो और एक्सचेंज को नब माने एक्सचेंज करिवो निजो को एक्सचेंज करिवो. तो को पार्ट रे कोन कले सी ता भीतर डेवलपमेंट होउची को पार्ट रे कोन कले सी एडॉप्टेड ही परुची सोसाइटी रे बा त फैमिली रे बा कोनसी गुटे ऑर्गेनाइजेशन ले ए भलिया कांसेप्ट ता पकरे ई स्टेज रे डेवलपमेंट होबो जोटा हम इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज कथा कहउचंती. Then the next level that is conventional morality जोटा कि morality stage और maximum number of moralities are inculcated within this stage because ए stage रे सिखिबा पई आम पाखरे morality को जीवा पई गुटे conducive environment आम पाखरे थाए. The next period of moral development is marked by acceptance of social rules. आम सेतबे social rules को accept करंती regarding that what is good or and moral. During this time adolescents and adults internalize the moral standards they have learned from their role models from society and from society. तो जो नॉर्म स्टैंडर्ड बा मोरल स्टैंडर्ड जोटा रहउची से सोसाइटी रे हो बा तांकर जो रोल मॉडल जो मानकु से माने रोल मॉडल करथान तांको पाखरु हो से माने इनकलकेट करंती तांको भितरे. And this period also focuses on the acceptance of authority and conformation to the norms to the group. There are two stages जेमिति प्रथम लेवल ले दीटा स्टेज थिला. Similarly here also we found two stages. The first one is stage 3 developing good interpersonal relationship. First stage रे कोन करा जाय कोन करंती से माने they should try to develop good interpersonal relationship with others. कारण ता पूर्वरु जो स्टेज रे थांती से माने सेतटा एक्सपोज हि न थांती सोसाइटी रे बहुत लोकन सहित सेतटा एक्सपोज हि न थांती. But here in that stage 3 we found the individuals who are belong to adolescence and जो early adulthood period तो से स्टेज रे से माने एक्सपोज होंती बहुत लोकन सहित मिसंती. ड्यू टू दैट here we found good interpersonal relationships are according by occurred. Okay, so there is an emphasis on conformity, being nice and consideration of how choice influenced relationship. तो एठी relationship ऊपर बेसी फोकस करा जिवो. थ्रू relationship आम भितरे moral concept रो डेवलपमेंट आमे करू. Then the stage 4 next stage that is maintaining social order. Okay, तो ए स्टेज रे जेहेतु तांकर डेवलपमेंट माइंड बा माइंड रो मैच्योरिटी आडू से माने जानती. ड्यू टू दैट दे शुड अंडरस्टैंड एंड मेंटेन द सोशल ऑर्डर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन. द स्टेज इज फोकस्ड ऑन एंश्योरिंग दैट सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड. एट दिस स्टेज मोरल डेवलपमेंट प्रॉपर बिगिन टू कंसीडर सोसाइटी एज ए होल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स. तो सोसाइटी गुटे होल गुटे पार्ट रे हमें जजमेंट दियंतिनी. वी कंसीडर आवर सोसाइटी व्हिच वी लिव that is a whole concept and the thing which we decide for society au jota ki sabu part ku successfully meet करथु. The focus on the maintaining law and order by following the rules, doing one's duty and respecting authority. तो rule जेमिति follow करिबा, following the rules
then doing one's duty को आमे properly maintain करिबा and similarly आउ कोन करिबा ना respecting authority जो माने हम सोसाइटी रे हो हम ऑर्गेनाइजेशन रे हो विभिन्न जगह रे जो माने authority अछंती we provide adequate respect to them. Okay, so that is the second stage, जो second stage of level 2 आउ stage 4 रो कथाटा हला या बर्तमान हम stage 3 बा level 3 को जिबा. That is a post conventional जोटा कि later period of रे हम लाइफ रे हुए जो थारे कि जो जगह रे कि हमें fully matured ही जाई थांती. So सही stage रे हम पाखरे केमिति morality रो development होची. At this level, the moral development, people develop an understanding of abstract principle of morality. Abstract principle. That means semane nije kichi nuwa decision, kichi nuwa morality ro concept tanko bhitere develop kari paranti. And the two stages at this level are, first one is stage 5, that is social contract and individual rights. Au मन रखिबा जो level 3 टा very few number of जो पर्सन्स हम सोसाइटी रे अछंती ताकरी पाखरे ही हुए समस्त को पाखरे हुए नाही बहुत रेयरली हमें एही पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी रो डेवलपमेंट हमें देखिया पे पाऊ बिकॉज़ दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट जहा पाखरे एब्स्ट्रैक्शन रहइबो जियार मेंटल डेवलपमेंट बहुत भलो भाबरे डेवलप हेई परथुबो सेही मान को पाखरे ए पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी रो डेवलपमेंट हुए. द आइडिया ऑफ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स कॉज पीपल इन द नेक्स्ट स्टेज टू बिगिन टू अकाउंट फॉर दैट differing values, opinions and beliefs to others people. Rules of laws are important for maintaining a society, but members of the society should agree upon these standards. बुझी ना नहीं तो आमे जते बेले हमर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहूची आमे जो इंडिविजुअल राइट्स रहूची से सब कथा को बुझिले जाई कि आमे प्रॉपर्ली एडिक्वेटली सोसाइटी रे पार्टिसिपेट करि परिबा बा गोटे सोसाइटी रो पार्ट हे कि रहि परिबा. The rules of laws are important for maintaining a society, but members of the society should agree upon these standards. तो जो रूल टा सोसाइटी पई तयारी हिची सेटा सोसाइटी रे रहिबा दरकार किंतु all the individuals who are live in that particular society they should also obey all the rules and regulations. Okay, then the stage 6, that is universal principle. Kohlberg's final level of moral reasoning is based on the universal ethical principles and abstract reasoning. कहा ऊपर लास्ट बेस हुए इथुर क्वेश्चन बहु बार पकेइची यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कोन स्टेज रे कोलबर्ग को थ्योरी कोन स्टेज रे थाए द लास्ट स्टेज बस स्टेज 6 एंड abstract reasoning रो कांसेप्ट सेते बेला हमें पांती. एट दिस स्टेज पीपल फॉलो द इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इवन इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉज एंड रूल्स. ठीक अछि तो जो प्रिंसिपल जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम सोसाइटी रे अछि ताको प्रॉपर्ली दे शुड इंटरनलाइज देम. And also at that time we also found some conflict with laws and rules. जो rules regulations हम society रे अछि बार जो laws हम life रे बा हम society बा हम social different organization तयारी करछि ता भीतर विभिन्न conflict को हम एठी जज करि पारु आउ केमि ताको modify करि कि हम individual को benefit देई परिबो से बाबद हम discussion करि पारंती. So that is the final stage of moral development. Okay, तो तीनटा लेवल लो जेमिति 6टा स्टेज को हम एठी अब डिस्कशन कले बर्तमान हम नेक्स्ट पार्ट को जिबा. That is application of Kohlberg's theory. तो को जगह रे हमें Kohlberg's theory को apply करूचंती. The first one is understanding Kohlberg's theory is a moral development is important in that it can help parents guide their children as they develop their moral characters. जदि हमें properly को स्टेज रे कोन हमर moral development होउची गुटे natural process रे ताकू जदि बुझिले then that is easier for the parents to develop proper moral characters in proper age or stage. Then parents with younger children might work on rule obedience, for instance, whereas they might teach older children about social expectations. ठीक अछि younger children मान को rule obedience को केमति rule regulation को मानिबे आउ जो younger बा older children माने अछंती younger children मान को rule obedience, older children मान को social expectations society कोन तांको पाखरु एक्सपेक्ट करछि सेही कथा को रियलाइज हमें करांती. Then teachers and other educators can also apply Kohlberg's theory in the classroom, providing additional moral guidance. If we want to provide additional moral guidance to our students at school level, then also we follow the Kohlberg's theory of moral development. A kindergarten teacher could help enhancing moral development by setting clear rules for the classroom because सही stage रे rules को बेसी maintain करिया कथा कुहा जाय and the consequences of violating them. आउ violate कले कोन
जो पनिशमेंट तो आम ये कहीपरानी गोटे कन्सिक्वेन्स कौन रहा प्रोब्लेम आगू को हम से बाबद गोटे सेटअप तैयारी करने कहूँ किंडरगार्टेन स्टेज रे एंड दिस हेल्प्स किड्स एट स्टेज 1 ऑफ मोरल डेवलपमेंट. Then the teacher in high schools might focus more on development that occurs in stage 3 and stage 4. Stage 3 और stage 4 रे केमिति डेवलपमेंट होउची सेही कथाटा को हमें मेंटेन करिबा जो हाई स्कूल लेवल ले. This could be accomplished by having the students take part in setting the rules to be followed in the classroom, and by realizing all the rules and regulation the individual बा आमे कहि परिबा जो टीचर से भलिया गोटे सर्कमस्टेंस बा से भलिया गोटे सिचुएशन क्रिएट करिवे जो सिचुएशन रे कि स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर मेंटेन्ड एट स्कूल लेवल बाय द टीचर्स एंड गिविंग देम ए बेटर आइडिया ऑफ रीजनिंग बिहाइंड दीज रूल्स आउ माने प्रॉपर रीजनिंग से रूल्स पछरे कोन कोन रहउची से रीजनिंग्स गुडा को भी से क्लियरली आइडेंटिफाई करि पारंती देखि पारंती. So these are all about your applications of Kohlberg's theory. Then now come to the next part, that is criticism of for Kohlberg's theory of moral development. को एरिया रे हमें क्रिटिसाइज कलु moral development को नेकी Kohlberg's theory करो से बाबद रे हमें टिके वर्तमान देखिबा. Then most a moral reasoning does not equal moral behavior. Moral reasoning को हमें moral behavior कहि परिबा नाही. Moral reasoning does not equal to moral behavior. Kohlberg's theory is concerned with moral thinking, but there is a big difference between knowing what we ought to do versus actual actions. कौन करिबा दरकार आ एक्चुअल एक्शन कौन ए दिटा भितरे से क्लियरली जो क्लासिफिकेशन बा डिफरेंशिएशन से करि पारले नाही. Moral reasoning therefore may not lead to moral behavior. Due to that moral reasoning टा moral behavior को जो नेई की जाई परला नाही properly. Then next one is over emphasizing justice. कहा ऊपर बेसी फोकस करा गला ना over emphasizing on justing ऊपर बेसी फोकस करा गला. तो critics have pointed out that Kohlberg's theory of moral development over emphasizes the concept of justice when making moral choices. तो केवल आमे justice ऊपर बेसी importance दोचन जेतबे moral choices नियंती. Factors such as compassion, caring and other interpersonal feelings may play an important part of moral reasoning. किंतु जदि आमे प्रॉपर्ली बा प्रैक्टिकली देखिबा then compassion, caring और other interpersonal feeling are very useful to maintaining good moral reasoning. Then cultural bias. Then individualist culture emphasize personal rights while collectivist culture stress the importance of society and community. जो माने individual को फोकस करूचंती से माने personal right ऊपर बेसी importance दियंती. जो माने collectivist जो माने socialist they should focused on the society and community. Then Eastern collectivist culture may have different moral outlook that Kohlberg's theory does not took into account. तो यही जो इंडिविजुअलिस्ट और कलेक्टिविस्ट भितर जो कॉन्फ्लिक्ट रहउची से कॉन्फ्लिक्ट को केमिति कारण इंडिविजुअलिस्ट गोटे अलग वे रे मोरल डेवलपमेंट कथा कहउची कलेक्टिविस्ट गोटे अलग वे रे मोरल डेवलपमेंट कथा कहउची. तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट रहउची से कॉन्फ्लिक्ट बाबद रे कोलबर्ग किछि डिस्कशन करले नाही. Then age bias. Most of his subjects were children under age 16 who obviously had no experience with marriage. The Hans dilemmas may be too abstract for these children. जो पिला मानु को एग्जांपल आमे देले तम मानक स्टेज बढ़ी गलानी तम मैच्योर हो गलानी तो एई एग्जांपल को तमे रियलाइज करि परछो. जदि एई भलिया गुटे एग्जांपल आमे छोट पिला को देलु तांकर तो बाहागर ही नै तो जते बेले ए कथा को समान रियलाइज करिवे तांको पॉइंट ऑफ व्यू निश्चित भाबरे डिफरेंट होबो देन द मैरिज इंडिविजुअल्स. तो एई जगह रे किछि प्रॉब्लम मध्ये क्रिएट हला एंड ए सिनेरियो मोर एप्लीकेबल टू देयर एवरीबॉडी कंसर्न्स एवरीडे कंसर्न्स माइट हैव लीड टू डिफरेंट रिजल्ट्स. Okay, then the last one is gender bias. Kohlberg's critics, including Charlo Gilligan, have suggested that Kohlberg's theory was gender biased since all of the subjects is in his sample were male. तो जेहेतु सबू जति एग्जांपल देइथिले सबू गुडा मेल को नेकी करथिले तो चार्लो जो गिलिगान से कोन कहले दैट इज जेंडर बायस्ड कांसेप्ट बोली ताकू डिफाइन करले. Kohlberg believed that women tendency to remain it the third level of moral development because they
place a stronger emphasis on things such as social relationship and welfare for others. तो सोसाइटी रे जो फीमेल मानकर जो डिफरेंट रोल रोची ता पई कॉलबर्ग कर कांसेप्ट टिक डिफरेंट थिला ड्यू टू दैट here we found there are some gender biasness concept in the Kohlberg's theory of moral development. So these are the basic criticism of Kohlberg's theory of moral development. So thank you, thanks for watching. तो आमे नेक्स्ट पुनी नुआ नुआ वीडियो नहीं कि आसीबा. Okay, stay tuned with us. Thank you again.